हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए लाइव स्ट्रीम वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज करके यूजर को लॉगिन और साइन अप का फीचर दे सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल वीडियो को। तो सबसे पहले हमें फायरबेस के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, जो कि है firebase.google.com। और यहाँ पर आपको एक गो टू कंसोल का बटन दिख रहा होगा एट द टॉप राइट। ओके, तो आपको इस गो टू कंसोल बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यह एक फायरबेस का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने का होता है। एक्चुअली आप इसे कहते हैं प्रोजेक्ट पेज। तो यहाँ पर हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन एड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बटन। ओके, और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। सो माय प्रोजेक्ट नेम विल बी फायरबेस auth। ओके, यस, और जस्ट हिट द कंटिन्यू बटन। ओके, नाम देने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये गूगल एनालिटिक्स के बारे में मतलब प्रॉम्प्ट है कि क्या आप गूगल एनालिटिक्स को अपना प्रोजेक्ट में इनेबल करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं इनेबल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस ऑप्शन को मैं डिजेबल करता हूँ। एंड उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। सो यह आपके लिए एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो हम वेट करते हैं जब तक ये हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है। ओके, सो जैसा आप देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन डैशबोर्ड पर और यू कैन से द ओवरव्यू पेज। ओके, तो सो अब फायरबेस का यूज़ करने के लिए हमें अपने एप्लीकेशन को इस प्रोजेक्ट से लिंक करना होता है। तो चाहे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो या iOS एप्लीकेशन या एक वेबसाइट ही क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उस वेबसाइट को इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना होता है। ओके, सो मैं अभी के लिए अपने वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं इस वेब ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये मुझसे अपने एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है। तो आप अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ले देता हूँ फायरबेस और इसके लिए भी सेम वही। ओके, एंड यहाँ दे सकते हैं, ये से पूछ रहा है आल्सो सेटअप द फायरबेस होस्टिंग होस्टिंग फॉर दिस ऐप। मतलब क्या आप फायरबेस के थ्रू अपने इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करना चाहते हैं या नहीं। मैं अभी के लिए डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द रजिस्टर ऐप बटन। ओके, ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो चुका है। अब अगला स्टेप में ये मुझसे पूछा है कि मुझे मतलब सजेस्ट कर रहा है फायरबेस कि आपको फायरबेस का एक एसडीके टूल किट इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो अपने एप्लीकेशन को मतलब वो फायरबेस के थ्रू रन करने के लिए। ओके, सो हम चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पर। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है। यदि आपने नहीं किया है तो आप अपने मतलब जिस जगह पर भी अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो उस जगह पर जाइए। ओके, वीएस कोड के थ्रू और अपने टर्मिनल को ओपन करिए। आप कमांड प्लस जे सॉरी कंट्रोल प्लस जे, या आपको ऊपर फाइल मेन्यू में यहाँ पे टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल दिख रहे हैं, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एंड देन आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर सकते हैं। मैंने वाइट के थ्रू अपने एप्लीकेशन को क्रिएट किया है। तो आप वाइट के थ्रू क्रिएट करने के लिए कमांड लिख सकते हैं npm create वाइट एड्रेस लेटेस्ट। ओके, एंड उसके बाद डॉट। ओके, डॉट ये स्पेसिफाई करता है कि आप अपने रूट डायरेक्टरी में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद एंटर प्रेस करिए और जो भी आपसे मतलब अगला प्रॉम्प्ट पूछा रहा है तो अपने अगले स्टेप में ये आपसे बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टेम्पलेट पूछता है कि आप किस टेम्पलेट के साथ जाना चाहते हैं। आप रिएक्ट सेलेक्ट करिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, इट्स प्रीटी सिंपल। एंड मैंने आई वांट टू शो यू वन थिंग आल्सो।
लेट्स गो बैक टू फायरबेस कंसोल। तो यहाँ आप जैसा कर सकते हैं, यहाँ पर हमसे करा इफ यू आर यूजिंग npm and a module bundle such as web or you can run the following command to install the SDK। so मतलब SDK को इंस्टॉल करने के लिए so आपको यहाँ से इस कमांड को कॉपी करना होगा और टर्मिनल पर जाकर रन करना होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी इस फायरबेस एसडीके को इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने अब मेरे पैकेज और जेसन में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फायरबेस एंड रिएक्ट ये दो एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है। सो now let's go back to console. Okay, and then initialize the firebase and begin the SDK with the product। okay, and यहाँ देखते हैं आपको ये कुछ config दिया हुआ है। so your web for firebase configuration, this is the web firebase configuration। आपको just इस configuration को copy करना है। okay, और एक हम लोग SRC में एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक config स्लैश firebase डॉट कॉन्फिग डॉट जेस। ओके, तो मैंने एस आर सी के अंदर कॉन्फिग एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने फायरबेस डॉट कॉन्फिग डॉट जेस का एक फाइल किया, जहाँ पर मैं अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ। एटली आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन को env फाइल में रखना होता है। मैंने अभी के लिए ये इस एक कॉन्फिग फाइल के अंदर रखा हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं इस वीडियो के बाद इसे डिलीट कर दूंगा, तो उसे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, so now let's go to next step। okay, go back to console and now अब हम continue to the console बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, डन। अब आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे आपको फीचर दिख रहे होंगे फायरबेस के थ्रू। ओके, तो आप अपना जो फीचर को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो फीचर को यहाँ से सेलेक्ट कर कर और जो भी उसका रूल्स है उसको फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम डाटाबेस, ये दो फीचर का यूज़ करूँगा। ओके, ऑथेंटिकेशन में यूज़ करूँगा यूज़र को गूगल के थ्रू लॉग इन होने के लिए अपने साइट पर, एंड रियल टाइम डाटाबेस में इसलिए यूज़ करूँगा कि जो भी यूज़र को मुझे क्रेडेंशियल मिलेगा मैं उसे इस डाटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, सो ये हमें ऑथेंटिकेशन पेज पर रिडायरेक्ट किया है। एंड नाउ गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, सो नाउ आप जैसा देखते हैं यहाँ पर हमें अब प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होगा, जैसे साइन इन प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आप अपने जो भी लाइक प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए मैं गूगल को सेलेक्ट करता हूँ, ओनली गूगल। एंड टॉप राइट में आपको एक इनेबल का बटन दिख रहा होगा, जैसे इसे क्लिक करें इनेबल करना है। एंड यहाँ पर ईमेल अपना एड्रेस डालना होगा। ओके, जस्ट डन। एंड इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ओके, इट्स डन। तो जैसा कर सकते हैं मेरा एक प्रोवाइडर क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हम बिल्ड सेक्शन में उसके टॉप स्लाइड सॉरी साइड बार में बिल्ड सेक्शन के अंदर आपको एक रियल टाइम डाटाबेस दिखेगा। रियल टाइम डाटाबेस को हम क्लिक करते हैं क्योंकि हम मुझे डाटाबेस को भी क्रिएट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, लाइक क्रिएट डाटाबेस बटन पर क्लिक करें। ओके, सो यहाँ पर एक ऑप्शन उससे पूछ रहा है योर लोकेशन, लाइक तो हम डाटाबेस का लोकेशन हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हम जो भी नियरेस्ट लोकेशन है उसको सेलेक्ट करें, लाइक यूनाइटेड स्टेट ये बहुत दूर है क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए सिंगापुर ही नियर होगा। तो हम सिंगापुर साउथ एशिया साउथ ईस्ट वन सेलेक्ट करते हैं एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट स्क्रीन में ये हमने डाटाबेस का रूल्स डिफाइन करने के लिए करा है, लाइक यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टार्ट एंड लॉग मोड means your data will be private by default, client read and write excel will only be granted as specified by the security rules। so ये rules पास रहेंगे, बाकी क्लाइंट इसमें रीड एंड राइट नहीं कर सकते, बट हम अपने से रूल को इस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यूजर इस डाटाबेस में रीड एंड राइट कर सकता है। ओके, सो मैं अभी स्टार्ट एंड लॉग मोड में ही इसे क्रिएट करूँगा, जस्ट हिट द इनेबल बटन।
रोल्स हम लोग बाद में डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट डाटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका और ये इस डाटाबेस का यूआरएल है। ओके, अब हम रोल्स टैब पर क्लिक करते हैं। ये रोल्स भी डिफाइन करना होगा, तो हम इसमें रीड एंड राइट कुछ नहीं कर पाएंगे। सो रोल्स से रीड एंड राइट, ये जो अनऑथराइज्ड यूजर होंगे उनके लिए रीड एंड राइट एक्सेस फॉल्स होगा, और जो ऑथराइज्ड यूजर होगा जैसे कि जो इस क्रिएट किया हुआ प्रोजेक्ट को, सिर्फ वही उसको लॉग इन कर सकता है। ओके, आई मीन रीड एंड राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं करता हूँ रोल्स यूजर्स टेबल, एक टेबल क्रिएट होगा यूजर्स का, यूजर्स टेबल, एंड देन इनसाइड इट आई विल राइट $UID। ओके, एंड अगेन मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पर हम सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, रीड एंड राइट को कॉपी पेस्ट करते हैं, इंटेंशन को हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं। ओके, सो अभी के लिए जो ऑप्शन है रीड एंड राइट फॉल्स है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, लाइक $UID if it is equal to, okay, auth/UID। ओके, लाइक ऑथराइज यूजर के यूआईडी के, ये जो यूआईडी है, जो यूजर मतलब क्रिएट कर उसका जो यूजर आईडी है वो हमारे ऑथेंटिकेटेड यूजर के यूजर आईडी के इक्वल है, वही उसमें रीड कर सकते हैं। एंड सेम कमांड कॉपी करते हैं और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं, मतलब सेम यूजर उसमें राइट भी करते हैं। नाउ हम पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं। सो ये रोल स्पेसिफाई हो गया। ओके, लाइन नंबर 9 में यहाँ पर कॉमा एक मिसिंग था, तो नाउ डन, और हम पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे जैसे रोल्स पब्लिश हो चुके हैं। सो नाउ मेरा फायरबेस तो जो भी वर्क था वो सारा कंप्लीटेड हो चुका है। ओके, नाउ हम लोग अब कोड पर वापस चलते हैं अपने। सो यहाँ पर हमने एक फायरबेस कॉन्फ़िग क्रिएट किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हम लाइक पेजेस क्रिएट करते हैं अपने। ओके, तो आई विल क्रिएट पेजेस, इनसाइड दैट दो पेज होंगे, लाइक पहला होगा होम पेज, home.jsx। ओके, सो बेसिकली होम पेज पर मैं अभी के लिए जो ऐप पेज पर जो डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी को कॉपी और पेस्ट कर दूँगा। ओके, मैं आपको अपना प्रोजेक्ट रन का भी दिखा देता हूँ कि अभी के लिए वो कैसा दिख रहा है। सो रन करने के लिए मैं लिखूँगा कमांड npm run dev। ओके, एंड देन हिट द एंटर बटन। सो जैसा मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है लोकल होस्ट 5137 पोर्ट पर। ओके, so just control plus click on this link। ओके, जैसा देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन लाइक प्रोजेक्ट, सॉरी, दिस इज माय एप्लीकेशन। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू एप्लीकेशन। सो अभी के लिए मैं टर्मिनल को मिनिमाइज कर देता हूँ, एंड आई विल कॉपी ऑल द कंटेंट फ्रॉम द app.js पेज एंड कट इट। मैंने यहाँ से कट कर लिया एंड home.js पेज पर आते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमें इंपोर्ट को प्रॉपर करना होगा। तो लाइक यहाँ रिएक्ट लोगो, ये डॉट स्लैश असिस्ट की जगह पर डॉट डॉट स्लैश असिस्ट पर आएगा, क्योंकि हमें डायरेक्टरी से बाहर निकलना। डॉट डॉट स्लैश मीन्स ये पेज से बाहर आएगा और यहाँ उसके बाद वो असिस्ट एंड देन रिएक्ट डॉट एसवीजी को सिमिलर हमें स्टाइल के लिए भी वही करना होगा, डॉट डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। ओके, एंड देन ऐप पेज का नेम को चेंज करना होगा, लाइक दिस function name should be home। Okay, home page, and now under line number 35 also I will change this to home। Okay, now so अब हम वापस app.js पेज पर आते हैं और यहाँ पर एक मैंने ओके सॉरी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक शॉर्टकट वे, लाइक टू क्रिएट अ कंपोनेंट। आपको सिर्फ एक शॉर्टकट लिखना होगा RAFCE,
एंड हिट द एंटर बटन। सो ये आपके लिए एक डिफॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट कर लेगा। और ये कैसे मेरे में वर्क कर रहा है, आप में वर्क में भी ये वर्क नहीं कर सकता है अगर आपने एक एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो मैं आपको एक्सटेंशन शो करता हूँ। लाइक दिस इज द एक्सटेंशन ES7 रिएक्ट रिडक्स नेटिव लाइक स्निपेट। यह आपको कुछ रिएक्ट और रिडक्स और नेटिव से रिलेटेड स्निपेट प्रदान करता है। लाइक आपको सिर्फ वो स्निपेट को टाइप करना होता है और वो आपके लिए कुछ जो कुछ लाइन का जो कोड है वो लिख कर दे देता है। जैसे कि मेरे केस में एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। ओके, दैट्स नाउ क्लोज दिस। सो ऐप, सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस मैं अपने मेन ऐप पेज पर सॉरी और कंपोनेंट में राउट डिफाइन करूँगा। ओके, लाइक अभी के लिए यदि मैं अपने पेज पर जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ऐप दिख रहा है। ओके, सो मैं क्या करूँगा इस स्टेप में, इसमें सिर्फ राउट्स को डिफाइन करूँगा और मैंने आई विल शो यू पैकेज सर्विस में चलते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं मैंने रिएक्ट राउटर डॉम को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया किया हुआ है। ओके, तो आपको सिर्फ इस रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है और वो आपकी वो पेज में राउट्स क्रिएट करने का हेल्प करता है। ओके, तो चलिए हम राउट को क्रिएट करते हैं। राउट क्रिएट करने के लिए आई विल यूज वन एलिमेंट कॉल्ड राउट्स, जो कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम से मिल जाता है। ओके, डन। And then I will define routes. Okay, and this is defined the home page. Okay, तो ये सजेशन भी मुझे एक मैंने एक UI सॉरी एक एक्सटेंशन से आ रहा है। तो वो एक्सटेंशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो एक्सटेंशन है ब्लैक बॉक्स डॉट ए। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद ये आपको आपके कोड के मतलब कोड को मतलब ये मॉनिटर करते हैं और उसके अनुसार आपको सजेशन देता है। तो नाउ राउट इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो मुझे राउट को भी इंस्टॉल करना। तो इस डन, राउट इंस्टॉल हो गया एंड इसका होम पेज। तो अब मैं अपने वेब पेज पर जाता हूँ, फिर ब्राउजर पर जाता हूँ और एंटर बटन पर क्लिक करता हूँ। देयर इज सम एरर, लेट मी ओपन द कंसोल। ओके, कंसोल से हम अपने एरर को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी लाइक यूज राउट्स, एक एरर इसमें है राउटर। आई थिंक yeah, the above error occurred in the routes component only. So use routes may be used inside the context of router component. Okay, so I have got the issue like यहाँ पर मैंने एक राउट डिफाइन किया है। तो आपको अपने यदि एप्लीकेशन में राउट को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको अपने मेन रूट प्रोजेक्ट को एक ब्राउजर राउटर के अंदर रैप करना होता है। ओके, तो मैं अभी main.js जो कि हमारा रूट फाइल है जहाँ से सारा प्रोजेक्ट रन होता है, उस पेज पर आया हूँ। ओके, so now what I will do, I will let's do one thing, just cut this app। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्राउजर राउटर। ओके, ब्राउजर राउटर जो कि रिएक्ट राउटर नाम से इंस्टॉल होता है। ओके, तो मॉडल को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर हम ऐप को पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या है, मैंने अपने एप्लीकेशन को ब्राउजर राउटर के थ्रू रैप कर दिया है। सो अब हम अपने एप्लीकेशन में राउट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, you can see home page is up and running. Okay, so this is the white plus react application and count is also working. So now go back to our projects and again go to app.js. Okay, so now again I will create one route. Okay, the route is the route, तो यह राउट मेरा साइन इन पेज के लिए होगा। तो मैं अब एक साइन इन पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ, एक साइन इन डॉट jsx। So I have created a sign-in.js. Just write a code snippet like RAFC. Okay, and press enter। So component create हो चुका है। वापस app.js पेज पर आते हैं। अब इस राउट के लिए हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं। So
path will be, sorry, inside the code, path will be sign in, okay, and then element, okay, so element इक्वल टू साइन इन पेज, जो पेज हमने क्रिएट किया है, तो साइन इन रजिस्टर आई एंड इट्स आल्सो इंपोर्टेड। सो नाउ वी कैन चेक, लाइक हम अभी के लिए हम होम पेज में रूट पेज, नाउ इफ आई add a end point like called sign in, so as you can see redirecting to sign in, और यदि हम slip says यूज करते हैं तो ये हमें होम पेज पर redirect करता है। so now route is working, okay, sorry, I got a call, okay, so let's start, where are we, ओके, सो हमने राउट्स क्रिएट, अभी के लिए हम एक छोटा सा रिकैप दे लेते हैं, ओके, सो क्या क्या स्टेप हमने क्रिएट किया, हमने फायरबेस पर जाकर एक फायरबेस पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ओके, शुरू से देता हूँ। फायरबेस कंसोल पर मैंने यहाँ पर एक फायरबेस ऑथ का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ओके, एंड देन वहाँ से हमने दो फीचर को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अपने ऐप को इसमें लिस्ट किया है, आप इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन को भी लिस्ट कर सकते हैं, ओके, एंड देन हमने दो फीचर को इसमें इम्प्लीमेंट किया है, फर्स्ट ऑथेंटिकेशन, ओके, दिस इज द ऑथेंटिकेशन, और इसमें हमने प्रोवाइडर सेलेक्ट किया, लाइक साइन इन मेथड गूगल को सेलेक्ट किया है, एंड देन हमने क्रिएट किया है रियल टाइम डाटाबेस, ओके। और हमने कोड में अभी तक क्या किया है, कोड में लेट मी शो यू, सबसे पहले कॉन्फ़िग फाइल को हमने यहाँ सेव किया है, एंड देन दो पेज को हमने क्रिएट किया है, लाइक होम पेज एंड साइन इन पेज, दैट्स इट। सो नाउ अभी हम क्या चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में कि जो यूजर, ये जो हमारा होम पेज है वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर, लाइक जो यूजर हमारे पेज पर लॉग्ड इन है सिर्फ वही इस पेज को देख पाए, अदरवाइज जो यूजर इसमें लॉग्ड इन नहीं है तो यदि होम पेज को विजिट भी करे तो उसको सीधे साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब जैसे कोई पेज कोई भी यूजर हमारे इस पेज को विजिट करता है और वो हमारे सिस्टम में लॉग्ड इन नहीं है, ओके, सिर्फ लॉग्ड इन नहीं है तो उसे पहले साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट करें एंड देन उसे डैशबोर्ड को, और यदि वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसे होम पेज पर सक्सेसफुली रिडायरेक्ट करें, ओके। सो नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फीचर, ओके। तो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करेंगे, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा कि जो यूजर है, जो करंट यूजर है वो वेदर हमारे सिस्टम में लॉग्ड इन है और नहीं। तो इसके लिए हम एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं, so I will click on src and then plus new file, okay, and here I will create one context slash profile dot context dot jsx, okay, hit the enter button. So this is the context file, okay. So now here I will write export const profile const text equal to create context, okay। I आई नो कुछ लोगों को मेरा सिस्टम स्लो फील हो रहा होगा, बिकॉज मेरा सिस्टम का प्रोसेसर स्लो है, इसलिए मैं अभी के लिए थोड़ा स्लो ही लिखता हूँ, ये थोड़ा स्लो वर्क भी करता है, ओके। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड and adjust yourself also according to the situation, okay। now right, let's start the proceed further, okay। so here यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया, ओके। नाउ अब हमें एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा, सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोफाइल प्रोवाइडर, ओके, आई डी प्रोफाइल प्रोवाइडर, it will take children, okay, as a parameter,
and then it will return, ठीक है. Profile provider will return uh, as you can see it show the suggestion also. Don't worry if you don't understand, like यहाँ पर क्या किया है हमने, प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है उस कॉन्टेक्स्ट को हमने लिया एंड दैट प्रोवाइडर, ठीक है. उस प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर क्या करता है, जो भी कॉन्टेक्ट मतलब स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक ये यूज होता है. तो वाट एवर स्टेट यहाँ पर हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो वाट एवर चिल्ड्रन जो इसके अंदर जितने भी सारे चिल्ड्रन है वो उसको डायरेक्टली अवेलेबल होगा. लाइक आप, आई होप यू गाइस नो अबाउट प्रॉप्स, लाइक कैसे हम लोग एक पेरेंट कंपोनेंट से और आपको चिल्ड्रन कंपोनेंट में पास करते हैं. सिमिलर वे, लाइक यदि हमें पेरेंट, सपोज आई हैव और वी हैव अ ग्रैंड पेरेंट, तो मतलब सबसे पहले एक पेरेंट है उसके अंदर एक अनदर चाइल्ड पेरेंट है, उस चाइल्ड पेरेंट के अंदर अनदर एक चाइल्ड पेरेंट है, और हम टॉप मोस्ट पेरेंट कंपोनेंट से और बॉटम जो है बॉटम में चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें यदि कोई डाटा पास करना चाहते हैं तो हमें पहले पेरेंट से फर्स्ट चाइल्ड में फिर उस चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड में पास करना पड़ता है. और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जो भी लाइक प्रॉप्स है उसको वो डायरेक्टली इस चिल्ड्रन में अवेलेबल करा देता है. तो वट एवर चिल्ड्रन इनसाइड इस कॉन्टेक्स्ट है उसको वो सारे डाटा, मतलब जो भी डाटा है इनिशियलाइज हम लोग किए हैं उससे वो मिल जाएगा. ओके ना. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. ओके. सो मैंने जितना सिंपल हो सका, जितना सिंपल तरीके से आपको समझाया है, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. तो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक. ओके. तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल प्रोवाइडर भी क्रिएट हो चुका है. ओके. नाउ अब यहाँ पर हम स्टेट को क्रिएट करते हैं. ओके. सो कॉन्स्ट प्रोफाइल सेट प्रोफाइल, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर यूज स्टेट. ओके. सो नॉट यूजर, यूज स्टेट. ओके. और इनिशियली वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू इसका हम डाल सकते हैं. ओके. नाउ आई विल क्रिएट अनदर state. It will be each loading, mm, not capital S, small s, set each loading. Okay. uh, okay. So now initial value इसका true रखते हैं. Okay. It will be true. Okay. Now let's create a if use effect. So use effect, uh, so whoever does not know like what is use effect, so use effect एक फंक्शन है जिसमें हम लोग लाइक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन को इसमें लिखते हैं. सो लाइक इफ आई show you the definition of the use effect, let's open the definition. Don't worry, it will take just some time. Like use effect is a react होगी, एक react होता है जिसमें हम सिंक्रोनाइज लाइक एक्सटर्नल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. ओके. और यदि आपको डिटेल इस पर वीडियो चाहिए कि यूज इफेक्ट क्या करता है, so you can comment down and I will try to make a video on it. Okay. So now let's write the logic inside the use effect. So first यहाँ पर क्रिएट करता है let user reference like user app, and then I will create a one function inside this use effect like const auth on sub. Okay. Like it will यहाँ पर करते हैं auth on auth, sorry it is not showing me the like reference, but yeah, line number 2 I will write
import open and close curly braces from uh, Firebase slash auth. Okay, so now yes, I think now it will show me the suggestion also. Okay, so now auth on sub. So here I will write on or state change. Okay, so like auth on state change, what it will do, yeah, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। यदि कोई भी मेरा जो ऑथराइज मैंने फीचर को सेलेक्ट किया उसमें कोई भी चेंज होता है, उसके स्टेट में कोई चेंज होता है, तो ये उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और ये ट्रिगर होगा। ओके, सो ऑन ऑथ स्टेट चेंज, यदि सो हियर यू कैन सी द रेफरेंस definition of it also adds the observer for changes to the user sign in state। तो जैसे हम लोग यूजर में साइन इन करते हैं और साइन आउट करते हैं, सो ये एक इसे ऑब्जर्व करेगा और इस मैटर को वो ट्रिगर करेगा। ओके, एंड नाउ ये जैसा बताते हैं इट विल टेक अ ऑथ, एक ऑथ फंक्शन लेता है। तो आई विल गो टू माय config file, config firebase.config, and here I will initialize the auth also। so here I will write export auth, not auth, export const auth equal to get auth, so it will come from Firebase slash auth get auth, and I will pass application inspector। Okay, similar, here I forgot to add one more thing, like as you know, जैसे आप जानते हैं कि हमने डाटाबेस को भी क्रिएट किया है, रियल टाइम डाटाबेस भी क्रिएट किया है application। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें इस डाटाबेस की पाथ को भी अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करना होता है। तो हियर आई विल ऐड database, okay, URL। so just notice here, like database will be small and URL will be capital letter। Okay, and here I will write the database URL, and also we need to call this also, so export const database equal to get database। Okay, some suggestion or not? No, it's not some suggestion, but no worry, I know where it's come from। so data, not data, sorry, database, and pass the app inside it। Okay, so just copy this database, now just import it from import from Firebase slash database। Okay, Firebase slash database, and it will come get database here। Okay, now you can see the definition of it, like return an instance of real-time database SDK that is associated with the provided Firebase। Okay, just now go back to profile context page। Okay, and here const auth on sub, so here I need to pass the auth जो auth मैंने हमने create किया auth instance। so auth, okay, then in the next step what it will take, it will take a next observer, okay, like user। so what should I need to pass here? Yeah, I think, let me think, auth on state change। Okay, it will take an authentication like auth instance, and the next or observer, and error and function। so I think it will take an async function, and it will, here it will be auth object। Okay, so yes, inside us auth object, okay, it's correct। And now let me write if this auth object is
there. Okay, like a callback function here return करता है. Okay, I will say like auth on state change, यह एक auth इंस्टेंस लेता है जो हमने क्रिएट किया है Firebase config में, और यह एक कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करता है जो कि प्रोवाइडर में मतलब पैरामीटर में auth ऑब्जेक्ट करता है, जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसका डिटेल्स देता है. ओके, तो यदि हमारे पास यदि यूजर लॉग्ड इन है तो हमें auth ऑब्जेक्ट मिलेगा. if ये लॉग्ड इन है तो मुझे auth ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा. so if there is user, so what I will do, I will store his reference. Okay, user reference, and from where it will come, it will come from database ref, and here it will take a database, और यहाँ पर हमें उसका पाथ प्रोवाइड करना होता है database में, मतलब किस पाथ में यूजर का डिटेल स्टोर है. सो इट विल स्टोर एज डाटा here users slash dollar slash auth object. Okay, auth object dot uid. This will be the location where user information will be stored. Okay, so the user slash user id पर हमें यूजर का डिटेल मिलेगा. ओके, एंड दिस रेप विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लोकेशन. सो नाउ इट्स डन. सो नेक्स्ट स्टेप में नाउ आई विल डू ऑन वैल्यू. ओके, so now what it will do, it will listen the data changes at per the particular location. Okay, so जिस लोकेशन पर डाटा का स्टेट चेंज हो रहा है तो इसको लिसन करने का एक मेथड है. ओके, so on value here data location will be user ref, when it will return a snapshot of that user. So now done. So here just I need to set the user information inside this like state profile state. So I will do set state, sorry, set profile, and then destructure the snap dot well, whatever जो वैल्यू हमें मिलेगा उसको हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यू आई डी को भी स्टोर कर रहे हैं. एंड आई ऑल्सो आई वांट टू सेव वन मोर स्ट्रिंग हियर लाइक ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर. सो ईमेल इक्वल टू auth object dot email. नेक्स्ट स्टेप आल्सो हमें ये जो लोडिंग स्टेट है उसको फॉल्स करना होगा. ओके, तो सेट इज लोडिंग टू फॉल्स. ओके, डन. नाउ लेट्स गो टू एल्स स्टेटमेंट, एंड हियर if there is user reference, okay, then of this listener, like here you can say na, we are listening on this state. Okay, so if there is no auth object, so यहाँ हमें लिसन करने का कोई फायदा नहीं है, so इसको हमें ऑफ करना होगा. so I will off. It will also come from Firebase database. Okay, and what it will do, it will dispatch like a detach a callback previously attached with the corresponding on, like here you can say like on value on child else, इसको सिर्फ डिटेच करने के लिए unsubscribe you can say. So off, and here I will pass the reference like this is the user, and then do set profile to null, and also set is loading to false. And now it's done. So this is the function which we have written, and where it stopped, let me see. Yeah, so after line number 2 just add unsubscribe also, like in the, as you can see in the use effect we are subscribing to the method. Okay, so we need to unsubscribe also. So for that we have to write a return statement, return a callback function. So here I will write thumbs up. Okay, it's done. Thumbs up,
and if there is user ref, then also off. Done. So we have written a logic, you know. So प्रोफाइल कॉन्टेस्ट के अंदर हमने लॉजिक को मतलब हम लोग दोनों लिख लिया कि वी हैव रिटन. So now inside the value just pass this state profile and is loading. ओके सो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है. अब हम दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो ये मॉनिटर करेगा इस कॉन्टेक्स्ट का. यदि प्रोफाइल हमें मिला है प्रोफाइल डाटा, दैट मीन्स यूजर लॉग्ड इन है. और उस यदि हमें यूजर लॉग्ड इन है और प्रोफाइल डाटा है तो हम उसे डैशबोर्ड पेज पर और होम पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे. अदरवाइज वी शुड नॉट रिडायरेक्ट, वी शुड रिडायरेक्ट टू द साइन इन पेज. ओके so for that just create a components slash public route. Okay, so write RAFCE, okay, public route. So just import context like const equal to, it will come from use context. context पे यूज करने के लिए हमें use context method का यूज करना था. use context and just pass the context here. So context will be profile context. So here is profile context. Done. So now here I will get a profile and each loading. So don't forget. Okay. Now I need one navigate function also. So const navigate equal to use navigate. Yes, it will come from React Router. Make it beautiful. Here, use navigate. Done. So now let's monitor this like profile and loading state. Yes. So use effect if, so it will check if is loading is false. Okay, is loading is false and yeah, there is profile. Okay, then navigate to home page. Okay, and we need to pass the dependency also. So I think dependency will should be is loading profile and navigate. This show will be dependency and return statement. I need to return write a return like if is loading is true, then just show this message like loading. आप यहाँ पर कोई एक एनिमेशन भी लगा सकते हैं बिल्कुल, जो देखने में और बढ़िया लगेगा. मैं अभी के लिए सिर्फ लोडिंग ही देता हूँ. सो इफ लोडिंग then else statement I will return the children. Okay, so I have not defined the children, it will not come from here, sorry. So it will come from as a props. Okay, children. Done. So public route is ready. Okay, just copy the public route because similar syntax होगा, just थोड़ा सा change होगा private route में. So let's create a private route also. So private route dot jsx and just paste the content. First change the component name. Okay, control D. So it will private route. Okay, and here just a minor change in the line number and level. If there is loading is fast and there is no profile, then it will redirect to sign in page. Okay, S I G N I N.
Okay, sign in page, otherwise all rest will be same. Okay, so now public profile, everything is ready. Now go back to home page like app.js. I think, and let's check the main.js also. So now, okay, here I need to do one thing also. I need to wrap this application with provider. Okay, profile provider. तो हम लोग create किया profile provider, just cut it and paste after the browser router. So now go to app. ओके, नाउ जो हम लोगों ने राउट क्रिएट किया है पब्लिक एंड प्राइवेट राउट, सो व्हाट आई वांट, तो हम क्या चाहते हैं कि जो होम पेज है वो प्राइवेट राउट हो, मतलब जो यूजर लॉग्ड इन है सिर्फ वही होम पेज को विजिट कर पाए. ओके, सो जस्ट कट द होम हियर, जस्ट राइट प्राइवेट राउट. ओके, ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड, जस्ट पेस्ट द होम पेज. तो होम पेज ये एक प्राइवेट राउट है. ओके, सो यदि user profile is there, then only it will be visible. Okay, now sign in page, it will be this is the only page which will be public. Okay, the sign in page is public. Okay, so here I will wrap it up with public route. Okay, public route, just paste it. I think all the step is done. Okay, we have done the request step. So now as can you see, user is नॉट लॉगिन, मतलब मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ इस वेबसाइट पर. सो यह मुझे साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट करेगा. यदि मैं साइन इन एंड पॉइंट हटा भी देता हूँ, साइन इन सिर्फ होम पेज पर चाहता हूँ मैं रिडायरेक्ट करें. सो इफ आई ट्राई टू गो टू होम पेज, सो विल सी लाइक मैं इस पेज पर लॉग इन नहीं हूँ वेबसाइट पर, सो इसलिए यह मुझे साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट. ओके, एंड दैट्स इट. सो नाउ let's go to sign in page. Okay, and write the logic for sign. Okay, so inside that div, okay, or I don't need a div also, just create a one button. Okay, and write content inside here like sign in with Google. It's done. So I hope button is visual sign in with, but nothing is working happening right now. So just write the logic. Okay, now here फंक्शन क्रिएट करते हैं लाइक कॉन्स्ट साइन इन, SIGNINWITH, sign in with provider. Okay, and it will take provider as a argument. Of provider, it will take. Okay, now just write the logics. First I will initialize a try catch block. So inside the try, write const credential. Okay, credential will be await sign in with pop-up. I think there is must be a method like sign in with pop-up जो कि Firebase auth से okay मिल रहा है. So sign in with pop-up, it will import from auth, and here is mirror like await expression allowed with the async function. Okay, I need to make this function as async also. So async start. Now uh, again I need to write like additional metadata. So like const user meta, it will be like get additional user information, and it will take credential, user credential. Start. So now let me check if user meta, or wait, before do this operation, what I will do, just console this console.log
user meta. Okay, so you can see like what user data available, but it's like here as you can see it's the method. ये एक method है जो कि sign in with provider, यहाँ पर हमें एक provider pass करना होता है. So I will take provider as Google auth provider. Okay, Google auth provider, and just write a function also const sign in with Google. Okay, sign in with Google. Okay, just create a arrow function. Okay, and just call this function inside it. Yes. Sign in with provider. Sign in with provider. It will take new Google Auth provider install, and just call this function to that button. I will so here write an on click method. On click and pass this sign in with Google. Okay, let me see what I will get. Okay, so just open an inspect button. Okay, clear the and just refresh it to see whether yeah, there's no error. Okay, so now just click on the sign in with Google button. Yes, sign in with Google button पर click करते हैं. It should open a prompt. I think why it's not working. The message part was good. It's not showing a error message. Okay, sign in with Google. It's not working. Why it's not working? Sign in with provider. Oh, we have okay. There's here the error. Sign in will pop up. Okay, as you can see now, it will take two arguments like one is the auth and second one is the provider. Okay, and I have forgotten both of them. No worry, just path auth which come from Firebase config. Okay, and then provider, whatever provider we taking as a argument, okay, which will be a Google Auth provider. Similarly, you can pass the Facebook Auth provider also in the same way. Okay, now just click on sign in with Google. Opening a pop-up. As you can see, it pop open over, and you just need to select your profile like account here. I have selected this Manish Tiwari, and as you can see, it's redirected to me to the home page. Okay, and I have the user details here. Okay, let me increase it. Okay, as you can see, like that profile I have you can see my email address and all. Okay, okay, so now one more thing I want to see in my database. So you can see in my database there is nothing. Okay, but if I go to authentication, you can see the identifier like one user has been logged into this application. Okay, so what I will do for now, as of now, I will delete this account. Okay, now if I go back and refresh it, like you can see it's again asking me to sign in with Google. And now I will also now अब मैं यहाँ पर डाटाबेस में कैसे हम अपने यूजर एप्लीकेशन को यूजर डिटेल को कैसे ऐड करते हैं उसका लॉजिक होगा मैं लिखना सिर्फ डेस्ट लॉजिक जो कि बचा हुआ. सो हियर आई विल चेक इफ यूजर मेटा डॉट इच न्यू यूजर. ओके, लाइक बार बार सेम यूजर लॉग इन करे तो हम बार बार तो डाटाबेस में राइट करेंगे ना. सो यदि पहली बार कोई यूजर हमारे पेज पर लॉग इन करे तो हमें उसके डाटा को database में सेव करना होगा. Okay, so for that I will use write set. Okay, then ref. I think set is not important. Yeah, it should come from Firebase database, and then ref भी Firebase database से ही आएगा. And then here database, I need to define the database, and then the location. So location will be
users, okay, and then dollar slash credential the user dot uid. Yes. Then just pass the value. Okay, so value will be name. Name will be credential dot user dot display name. And now one more thing, created it. Okay. Created it. It will be server timestamp. Okay, server. This come from database, Firebase this database. And one more thing, avatar. I want to store the user image also. So it will also come from credential slash user slash. Let me see. There is something request token, UID. I think there should be an image. Yeah, here it is. Photo URL. It's done. Now we have write a logic to store the user details. Now here it's simply alert. You write an alert function. So alert like what it would take. You have successfully fully logged in. Okay, you have successfully logged in. Okay, and in the error message, we just console the error. Okay, and then write an alert like something went wrong. Please try again later. Okay, for now, something went wrong. Stop. This is not the ideal message user return, but for as of now, I am returning this. Okay, so now I think everything is done. Just go back to our application and click here, sign in with Google. It will open a pop-up, and I have successfully logged in. Okay, now go back to our authentication, refresh this. Okay, I have this user information here. Go back to real-time database. Okay, let's see. Yeah, here user table has been created, and here you can see one user data has been stored here, like avatar, created and name. Okay, it's done. So now one more thing I want to so like in the home page itself, I want to show the user information like username. Below this white here, like welcome user address to this page, and after all thing, I want to add a logout button here also, so that the user can log out from this. Okay. I hope you understand what I'm trying to achieve. Okay, so look at that. So where here, okay. So सबसे पहले हम user information को paste करते हैं. So first it will be, and I hope you can think from where I can get the data, like use context. Yes, you are right. From the context API, use context, profile context. Okay, it's done. And here I will have the profile object. Okay, so now let's show the user information here. So let's add a p tag. So welcome any user details. User will be this profile dot name. Let's see if I'm getting this. Okay, you can see welcome Manish Tiwari. Okay, so now the one more thing, I just need to add a one logout button at the bottom. So after this p tag,
I will add a button and which will state as logout and just write a method for it. Okay, function you or whatever you say. So const logout. Okay, okay. So how I we can log out from the system? So जैसा जाता है हम लोग मेरे पास एक auth ऑब्जेक्ट पहले से है auth instance. So I will import that auth. Okay, and then write this auth dot, and here you can see lots of method, and a one of the method is again means एक method है sign up. So we just need to use this auth dot sign out, and here you can see this is sign logout button here. Just click on the logout button को click करते हैं. Let's see what is. नथिंग इज हैपनिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लॉग आउट फंक्शन तो लिख लिया लेकिन उसको कॉल नहीं किया है। इट्स अ सिली मिस्टेक। लेट्स कॉल इट ऑन क्लिक pass this logout. Now again go to refresh it. Now it's signed as welcome Manish Tiwari, and if I click on this logout button, it should log out to the system. But what's happened? I think something went wrong. Let's go and check it. Okay, so what is the error? Cannot read the property of null reading name. And where is part? Home page. Okay. So जैसा लॉग आउट करने के बाद प्रोफाइल में नेम नहीं है. So here what I will do, just add a optional chaining here. It's done. Now successfully redirect to the login page. Okay, कि हम लोग अपने like लॉग आउट हो चुके हैं एप्लीकेशन से. Okay. So again just try to log in, sign in with Google, and here you can see it's successfully logged and redirect to the home page, and it's showing this welcome Manish Tiwari, and here is the logout button. Just click on the logout button, it will be logged out of the system. Okay, and here you can see the user details like on. So it's done. So I hope you have liked my presentation, and okay, the way I have show you how to implement this thing. So यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो जस्ट लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. So just thank you guys. I will meet you soon in the next video.